Good morning, everyone, and welcome to my Sunshine Academy. Now, this is the new conservatism after 1815. 1815 में क्या हुआ था? कांग्रेस ऑफ वियना. सो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. इसके बाद क्या हुआ था? इस इसके बाद बहुत सारा चेंजेस आए थे, जैसे कि एज आई टोल्ड यू बिफोर. सो उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं. That is, इसके बाद नेपोलियन defeated of Napoleon in 1815, European government were the driven of the spirit of the conservatism. Uh, Conservatives believe that it is the established traditional institution of state and society, like the monarchy, church, social hierarchies, properties, families. ये इसमें वो लोग बिलीव करते थे. That is the however did not purpose to the return of the society pre-revolution days. रेवोल्यूशन के पहले वो लोग सोसाइटी को कुछ दे नहीं रहे थे. So rather they realized that is the changes of the initially by the Napoleon that modernizations could the effect of the southern strength and traditional institution like the monarchy. It could make the state power of the effective and strong. Modern army can efficient bureaucracy and democratic economy, the abolition of feudalism and the serfdom could strength, that is the autocratic monarchies. So the revolutionaries इसमें क्या था during the year of the 1815, following 1815, that is the liberal nationalist ये उभर कर आए थे कांग्रेस में. different ideas जो है वो सामने आया था. That is the Congress, Vienna Congress, to the fight to the liberty and freedom. Most of these revolutionaries saw that is the creation of the nation state and necessary the part of the struggle of freedom. एज ऑफ द रेवोल्यूशंस दैट इज द 1930 टू 1948 क्या हुआ था? यूरोप में एक टेंशन का माहौल था. दैट इज द फिलोसोफर्स लिबरलिज्म कंजर्वेटिज्म. इसमें लिबरलिज्म एंड कंजर्वेटिज्म इसमें फाइट हुआ था. फाइट मतलब ये दोनों जो सोच है ये सोच में फाइट हुआ था. That is the monarchy bring a government of the people. Liberal nationalism in the idea where the government is the based of the free will of the people. This is the first demand of the France, and it is known as the French Revolution. During this time, that is the French in France, that is the liberal revolutionary fought to go through the conservative regime to establish their monarchy and then the republic. They lead to the revolution spreading to the other countries of Europe, Greece. That is the examples, one of the most important examples, that is the Greece. Greece में क्या हुआ था? Greece is the examples for the such country where the nationalist movement is that is the culminated in the independence of Greece. That is why the period of the rightly called of the age of revolution. That is the hunger, hardship, and the popular revolt. The 1830 were the years of the great economic hardship in Europe. That is the first half of the 19th century saw the enormous increase in the population. Food storage, that is the widespread unemployment, brought the population of Paris out of the roads. So, what is the reason of the hunger, hardship, and the popular revolt in 1930 to 1948? That is the economic hardship था, population बहुत बढ़ गया था. That is the people क्या था, overcrowded हो गया था. Food storages increased हो गया था. खाना वक्त पे, टाइम पे या फिर आम आदमी के पास नहीं पहुंच रहा था. ये सब हो रहा था. What was the role of the hunger and the hardship in the popular revolt in Europe?
that is the food storage and the widespread unemployment brought the population of Paris out of the roads, that is the barricades were erected, and the Louis Philippe was the force to the National Assembly proclaimed the Republic, granted the suffrage of the adult men above the 21, and the granted of the right to work. What idea justify? That is the first half of the 19th century were the year of the hunger, hardship and revolt. Great economic hardship, that is the experienced of the ratio of the population larger than the employment generation. That is यहाँ पर जो रेवलियंस का जो अपलिफ्टमेंट हुआ था यहाँ पर 14 थ्रू द अर्ली 16th सेंचुरी पार्ट ऑफ द क्राइसिस ऑफ द लेट मिडिल एजेस. सो यहाँ से ही ये जो अपलिफ्टमेंट हुआ था ये रेवोल्यूशनरीज का यहाँ से शुरू हुआ था. इसके बाद जो हुआ था सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज द फ्रीडम ऑफ प्रेस. प्रेस का ये जो मीडिया का जो फ्रीडम है ये बढ़ गया था डेमोक्रेसी में. डेमोक्रेसी आ गया था. दैट इज द वेरियस नेशन मूवमेंट ऑफ द पायनियर ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास. मिडिल क्लास को धीरे धीरे एजुकेटेड करना शुरू हो गया था. दैट इज द डिमांड्स ऑफ द मिडिल वर्किंग क्लास. दैट इज द अपसर्ज ऑफ nationalism to the regrouping of the established government forces. What was the impact of the revolution liberals in 1848 in Europe? That is the cause, that is the discontent of the ultimate reason that caused the revolutions of the 1848 within Europe. That is the economic issues of the Europe which led unrest within the Europe, that is the urging them through the revolt. That is the economic issue were not, that is the reason to the less the discontent of the Europe. सो द मेकिंग जर्मनी एंड इटली. इसके बाद जो शुरू हुआ 1852 में, दैट इज द जर्मनी एंड इटली शुरू हो गया था. दैट इज द ऑस्ट्रिया हेल्प टू द ब्रिंग मोर लैंड ऑफ द किंगडम इन साउदर्न इटली. इटालियन नेशनलिस्ट एंड वेर द गुइस्पी गैरिबाल्डी. इसके बाद दैट इज द लॉन्ग कॉज ऑफ द नेपोलियनिक वर्ड्स टाइम जो शुरू हुआ था. दैट इज 1803 to 1815. Napoleon was fought to the early 1800 and the result of the recognition of the Italian state under the French Italy introduced that is the new ideas of the Republican government. Here you can see 1866 to 71 जर्मनी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का जो पिक्चर है मैंने ये गूगल से डाउनलोड किया है, आप लोग देख सकते हैं. इसको अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल से बेहतर, इससे बेहतर मैप भी गूगल में है, आप देख सकते हैं. दैट इज इसके बाद गैरिबाल्डी के नेतृत्व में दैट इज द इटली यूनिफाइड हो गया था. दैट इज द मार्च 1861. दैट इज द सारादिनान किंग विक्टर इमैनुअल के अंडर में इटली वाज डिक्लेयर्ड दैट इज द यूनाइटेड नेशन. सो इसके अंदर में यूनाइटेड नेशन के हिसाब से उन्होंने डिक्लेयर किया था इटली खुद को. ये है इटली किंगडम का जो मैप है, ये आप देख सकते हैं. इटालियन पेनिनसुला इन 1860. ये गूगल से ही डाउनलोड किया गया है. सो ग्रेट ब्रिटेन का जो नेशन स्टेट ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द सडन प्रोसेस. ग्रेट ब्रिटेन का देयर इज नो वन द ब्रिटिश नेशन बिफोर द 18th century. पीपल residing the British Isles were main English, Wales, Scot and Irish. Scot and Irish.
सो ये है ग्रेट ब्रिटेन का जो पिक्चर है, आप देख सकते हैं, दैट इज ग्रेट ब्रिटेन, ग्लासगो, आयरलैंड, डरबन, लीड्स, that is the Cardiff, England, Wales. That is the meaning of symbols. ये जो रेवोल्यूशन हुआ था, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स का जो शुरू हुआ था, डिफरेंट सिंबल जो शुरू हुआ था, उसके हिसाब से मीनिंग क्या था? दैट इज द एट्रीब्यूट, सिग्निफिकेंस, ब्रोकन चेन, एट्रीब्यूट, सिग्निफिकेंस, ये हेडिंग है। दैट इज द सिंबल क्या क्या था? Broken chain, that is, a broken chain means being freed, that is, the breastplate with eagle, bracelet with eagle, that is the symbol of the German empire, strength. Crown of the oak leaves, that is the heroism. Sword, that is the resilience of fight. Olive branch around the sword, willingness of the make peace. Black, red, gold, tricolor, that is the flag of the liberal nationalism in 1848, banned to the Duke of the German state. So the rays of the sunshine, beginning of the new era. So ये है मीनिंग। इसके बाद नेशनलिज्म, इंपेरियलिज्म के ऊपर थोड़ा बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो इश्यूज है वो शुरू हो गया था। द मेजर यूरोपियन पावर्स, नेमली रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगेरियन, being to take advantage of the nationalism in Europe. National nations of the capital is willingness of the industrialized to gain economy and the political power to the asserted of the influenced over the other form. The new imperialism promoted to the ideas of the nationalism. Nationalism is also emerged to the nations affected by the imperialism, main phase of the resistance and reaction. So thank you so much. Thank you so much your support. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.